Hi, I'm Niharika Nanda, and you are listening to Express Podcasts. Mobile Creches since 1969 has been working to ensure that children of migrant and construction workers receive the care, nutrition, and early childhood learning that they need in order to thrive. They have worked to create an environment that promotes women empowerment, family well-being, healthy children, and inclusive national growth. In the fifth episode of our series in association with Mobile Creches, we discuss about the work Mobile Creches has been doing in the tribal belts of India and how creches are a safe space for children to be a part of a holistic daycare system where they get adequate nutrition, access to play-based learning, and proper immunization. In this conversation, we will hear how Mobile Creches has brought to life its vision of a just and caring world for every young child through its efforts and initiatives. Today, we'll be joined by Chavi Vohra, Executive Director, Mobile Creches, who shares the story behind the organization and the work it's been doing in the tribal belts of India. Later in the conversation, Pradeep Kumar, Founder Secretary Nipun, Mobile Creches NGO partner, and Maimul Ansari, a creche worker, will be joining us to share how caring for children gives them agency to grow into adults who will prove to be strong pillars of Viksit Bharat. Chavi ma'am, let's start with you. Mobile creches have been at the forefront of early childhood development for decades. Could you share how it has contributed towards shaping the landscape of childcare in India? Sure, Niharika. Let me just give you a background, about the journey of mobile creche, how we shaped the early childhood development landscape in India. So MC's sole purpose has been early care, like 5 decades back. When Gandhi Smriti was getting constructed, our founder happened to walk past during one of her morning walks. She saw that the female construction worker was working and her child was in pile of dust and mud. She was touched and thought India has got its independence, but the status of young child belonging to these construction sites still are in adverse conditions. So it needed immediate attention and it couldn't wait. The child cannot really wait, right? So every child deserves health and holistic growth and development opportunities, that you will agree with me. This care movement within Meera Mahadevan, who's our founder, led to the start of the first mobile creche at the construction site of Gandhi Smriti. So soon our co-founder Devika ji joined Meera ji in her whole agenda. In these last 56 years, MC has had ground experience of running, testing models, childcare models across the length and breadth of India. For example, the nuances of running creches at construction site, where we began, to now where we are at tea gardens in Assam, brick-kilns and mineral grinding units in Rajasthan, rural creches in Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, and of course the urban slums across India. So you can imagine the kind of variety and the places, the settings we run creches. The cultural nuances, the social economic status, the language, with this vast experience and evidence to support, we began our scale journey in the last decade. Actually, we run directly. We also scale through our NGO partners and through government partnership. The fact that we have had tried and tested quality childcare models and evidence to support the successful operation has led to our organization becoming a trusted advisor to the government at center and the state level. Right. And ma'am, you mentioned that Mobile Creches, due to its initiatives and the work that it has done, has become a trusted advisor to the government. Can you tell us more about this? Sure, Niharika. I can cite some examples how we were part of shaping the whole agenda of childcare within the country. In 1996, we were part of advisory group for provision of creches. The formation rules the Construction Worker Act, that is BACWA. WCD invited mobile creches in 2012 for piloting Anganwadi cum creches. We also supported the government through drafting ECC policy in 2012, minimum guidelines for MBA Act in 2017, NAP 2020, and very recently Haryana creche policy, which came in 2023, and the Palna scheme. So these are recent examples how the whole discourse of early childhood development and mobile creches being part of it. Right. And tell us a little bit about your work in the tribal areas and what kind of challenges do you face while setting up creches there? So right now we are in 3 tribal belts of India. We are in Orissa. We started up our services, childcare services in 20
2022 actually in Odisha in Kyonjar, and then since last 2 years we are in Jharkhand and Chhattisgarh, interiors of that. The challenges that we face are first to actually get people to not only run but to manage the whole project. So human resource is the first thing. And before human resources, actually organization and institutions which would like to go and fund these areas. So luckily we have a very strong partner who's an institutional partner in both the cases, and with funds being taken care of, then finding right people to manage and run these creches was the next agenda. We have seen that consistently the attendance in these centers after establishing has been low. So actually convincing the families and the community to actually use some a provision like that. So they never had anything like that. So the demand creation that and the benefit to them has been a challenge, that why they should actually put their children here. They will get proper nutrition, their health will be taken care of, and all the vaccination will be met with throughout. So someone is actually overseeing all that part and also doing the early stimulation playway activities with them. So convincing that to them, I think behavioral change has been a big part of our work, and also finding spaces. I remember initially we were not actually able to find those spaces where we can have these creches. We're talking about really interiors of India, right? But however, in some of our states like Chhattisgarh and in Jharkhand, we were able to find some government spaces which the community only gave us, and we are running actually beautiful creches there. I would really urge here people who are hearing this to connect with us and go and visit, and how beautiful these creches are running. Other than that is actually when we are scaling up, especially far off because we are in Delhi, is the security issues, the protection issues, because what is happening in the centers, has the center opened up, not opened up, who's coming in, because we of course have a very strict guidelines and we have people monitoring it, we have community monitoring groups to do that. But however, security and the risk assessment and risk framework is a very, very big part of it. That is a learning for us in last 3 years. That has to be prioritized. The rest is all our activities are what we do with a child has to be customized according to that language, according to the cultural. So say for example, the songs they sing, the stories they use, we don't want to put something from Delhi. Obviously, it has to be what they use. So those nuances has to be taken care of. And Chavi ma'am, in your experience, what have been the most innovative approaches or programs that have shown a significant impact in early childhood development? I would start with the government coming in and taking the ownership. Like if I give you example of Haryana government and also Karnataka Rural Development Panchayati Raj Department, I mean, they completely own this whole creche piece within their state, and a massive scaling. I mean, not just coming out with this that we will have these many number of creches, but actually to take out the funds and parking there. I mean, of course, we know that crash, anything like that you run, which is for 6 to 8 hours, and you have integrated holistic things in it like health, education, nutrition, that means it will cost money and the people, right, who will run it, the crash workers. These two states have been brilliant. They have taken out funds from their state resources and allocated for the creches. So I think that has been really, really beautiful. So many numbers of women have got employed through actually running these creches because every creche has two workers. I would definitely give big shout out for these two government. Haryana also came up with the first creche state policy in India, and it came up with universalization of creches across their states. So I think there's a very, very good practices and best examples which can actually not just stand up for India, but for the entire world to see how the state takes the ownership and actually just not says it, but does it. So they're walking their talk. Yeah, so they're the true champions of early childhood development. Now we will be talking to Pradeep Kumar, Founder Secretary Nipun, which is the partner NGO for Mobile Creches. This part of the conversation will be in Hindi. प्रदीप जी, आपका एनजीओ निपुण मोबाइल क्रशेस के साथ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर काम करता है। इस पार्टनरशिप ने आपके बच्चों के लिए बनाए गए अर्ली लर्निंग प्रोग्राम्स को कैसे मजबूत बनाया है? नमस्कार। हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के साथ तो काम हम बहुत पहले से कर रहे थे, बट जब हम मोबाइल क्रचेस के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को लेके काफी कुछ बारीकियां जानकारी मिली
जिसको कि हम अपने डे केयर सेंटर्स में इम्प्लीमेंट कर पाए। और बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने गांव-गांव, बस्तियों-बस्तियों में जाके डे केयर वर्कर्स का आइडेंटिफिकेशन किया और उसकी पहचान करने के बाद उनको हम लोगों ने मोबाइल क्रचेस के हेल्प से ट्रेनिंग कंडक्ट कराई। और ये ट्रेनिंग जो है काफ़ी सघन प्रोग्राम था, जिसमें कि उनको पूरी तरीके से सशक्त बनाया गया, चाहे वो क्रचेस को लेके हो, बालवाड़ी को लेके हो या ब्रिज स्पोर्ट्स को लेके हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम को लेके हो या डॉक्यूमेंटेशन को लेके। तो मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा मोबाइल क्रचेस का। और उसके बाद जब हम लोगों ने फील्ड में जाके इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया तो देखा कि टीम ने जिस तरीके से एक चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम उनके तैयार किए और उनके साथ जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप किए या जिस तरीके से उनके लिए करिकुलम डिजाइन हुआ, वो काफी अच्छा था और काफी फायदेमंद रहा। और बड़े ही इजी वे में हमारे डे केयर वर्कर्स जो एक मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कोई डिग्री नहीं किया था, कोई बड़ी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ग्रास रूट लेवल से लेके उनको मोबाइल क्रच ने इस तरीके से तैयार किया कि वो किसी वेल क्वालिफाइड वर्कर से कम नहीं नजर आ रहे हैं। और आज अपने फील्ड में वो काम करते हुए बच्चों का बचपन वापस दे रहे हैं, उनके बचपन के साथ साथ उनके अधिकारों को वो वहां तक पहुंचा रहे हैं। और मोबाइल क्रचेस के जितने भी डे केयर सेंटर्स है एनजीओ पार्टनर्स के थ्रू, जब वहां आप जाएं तो पता लगता है कि एक माँ होती है जो अपने बच्चों का ही केवल देखभाल करती है, लेकिन मैं मोबाइल क्रचेस को बड़ी माँ मानता हूँ कि वो ऐसे हजारों बच्चों की देखभाल कर रही है और उनका लालन पालन कर रही है। जब माँ काम करने जाती है तो बच्चा हमारे सेंटर पे पूरी तरीके से सुरक्षित होता है और उसको हम शिक्षा की बात करते हैं, उसके साथ सेहत की बात करते हैं, साथ में सुरक्षा की बात करते हैं और पोषण की बात करते हैं। और प्रदीप जी, हमें ये बताइए कि मोबाइल क्रैशेस किस तरह अपने पार्टनर एनजीओज के फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेन करता है जिससे वो बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाए। मेरा मानना है कि मोबाइल क्रैशेस मोर देन 5 डिकेड्स का उन्हें अनुभव है और ये अनुभव केवल उन्होंने एक कमरे में या ऑफिस में बैठ के नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारा अर्ली चाइल्डहुड को लेके रिसर्च किए हैं, जमीनी स्तर पर जाके उसको देखा है, अनुभव किया है। उस आधार पे पूरे जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, चाहे वो बच्चों के कार्यक्रम को लेके हो, चाहे डे केयर वर्कर्स को लेके हो या इवन एनजीओ पार्टनर्स को भी लेके हो, उन्होंने उस तरीके से उसको डिजाइन किया है। तो मैं पाता हूँ कि हर एक कार्यकर्ता अपने आप को काफी मजबूत अनुभव करता है जब वो कार्यक्रम को जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करता है। और बहुत सारी बारीकियां हैं, अगर आप देखें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में केवल ऐसा नहीं है कि हम उनको सिर्फ कैसे रन करना है इसके बारे में बताना है, बल्कि बहुत सारे प्रकल्प डेवलप किए गए हैं हर बच्चों के लिए। चाहे क्रेच के लिए खेल पिटारा जैसा डेवलप किया गया है, बड़े ब्रिज कोर्स से बच्चों के लिए लाइफ स्किल्स और बहुत सारे भारत देश के बारे में और अन्य एनवायरनमेंट के ऊपर बातचीत की जाती है। और अगर आप प्री स्कूल की देखें तो वहाँ पे भी बच्चों को उनके जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उनको करिकुलम डेवलप किया गया है। साथ साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए केवल एजुकेशन की बात हम नहीं करते हैं, वहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है और एक किस तरीके से उनको ग्रोथ मॉनिटरिंग कार्ड को उनको भरना है और उसके बाद डॉक्टर्स किस तरीके से उसको एनालाइज करके बच्चों को कुपोषित, अति कुपोषित और सामान्य कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हम उन बच्चों को जो कुपोषित और अति कुपोषित होते हैं उन्हें विशेष आहार भी उपलब्ध कराते हैं और लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं जिससे कि बच्चा सामान्य कैटेगरी में आ सके। तो ये सारा प्रशिक्षण का ही इसका बड़ा योगदान है। और यही नहीं, मोबाइल क्रचेस लगातार उन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते रहते हैं, लगातार फील्ड विजिट करते रहते हैं पार्टनर्स एनजीओज को, और उनके साथ बातचीत करके अगर उनकी कोई और भी जरूरतें निकल के आती हैं तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है और टाइम टू टाइम उनको उनको चर्चा में लेके उनके साथ फिर से डिस्कशन करके उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक डेवलप करते हैं। यहाँ तक कि हमारे सेंटर्स में कई बार दिव्यांग बच्चे आ जाते हैं तो उन बच्चों के लिए भी बातचीत करके उनका
इंक्लूजन किया जाता है, जिससे कि उनको भी इंक्लूजन के द्वारा सामान्य बच्चों के साथ उनकी भी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। धन्यवाद प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए। एंड नाउ वी आर जॉइंड बाय मैमुल अंसारी, who has been working as a creche worker with mobile creches. This part of the conversation will also be in Hindi. मैमुल जी, आप कब से मोबाइल क्रेशेस से जुड़ी हुई हैं? 17 साल हो गए। और मैमुल जी, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि मोबाइल क्रेशेस के साथ काम करने से आपकी अपनी और आपकी पारिवारिक जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं? मोबाइल क्रेश वाकई में मेरे लाइफ का चेंज किया ही किया, और साथ साथ हमारे फैमिली का, मेरे बच्चों का, क्योंकि जो समझ मुझे मोबाइल क्रेश में आके बनी, मेरे 2 बच्चे हो गए थे, शायद इतना समझ मुझे नहीं था कि बच्चों का लालन पालन और जरूरत क्या होता है, जो सीखने को मिला। और मेरे वजह से मेरे बच्चे भी बदले और फैमिली भी बदली। तो सबसे बड़ी बात है, अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ कि मैं मोबाइल क्रेश में काम करती हूँ। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मैमुल जी, आपके काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों के माता पिता से बात करना और उन्हें समझाना कि उन्हें अपने बच्चों को क्रेशेस में भेजना चाहिए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये आप उन्हें कैसे समझाती हैं, और आपने पिछले 17 सालों में, जब से आप मोबाइल क्रेशेस के साथ काम कर रही हैं, बच्चों के माता पिता में कैसे बदलाव देखे हैं? शुरू में थोड़ा सा चैलेंज होता है मैम, पेरेंट्स के साथ, क्योंकि विश्वास, कहते हैं ना, बच्चे कोई ऐसे नहीं छोड़ देता, तो विश्वास जीतना। तो जहाँ जो बातचीत हमारी होती है, कहते हैं ना, अपने शब्दों से किसी का दिल जीतना, तो बातचीत होता है, फिर उनसे बातचीत करते हैं, हम अपने काम के बारे में बताते हैं, उनको लेके आते हैं अपने स्कूल तक, सेंटर तक। हम जो बच्चों के साथ कार्यक्रम करते हैं, जो एक्टिविटीज कराते हैं, वो देखती हैं, समझती हैं, और फिर छोड़ना शुरू करती हैं बच्चों को। और जब वो बच्चे छोड़ के जाती हैं और फिर जब काम से वापस आती हैं, तो बच्चे मतलब एकदम खुश दिखते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि, और वो कहती हैं कि दीदी, हमारे बच्चे अगर आपके पास हैं तो हम बेफिक्र होके और खुशी खुशी काम करते हैं। तो हमें अपने आप में भी बहुत गर्व होता है और हमारा भी मनोबल बढ़ता है। अगर वो खुश होती है तो हमारे अपने काम के प्रति भी मनोबल बढ़ता है और हमें लगता है कि नहीं, हमारा काम सफल हुआ। और फिर जैसे हम कोई त्योहार मनाते हैं या बच्चों को कोई चीज सिखाई, जैसे कई माँ आके बोलती है, दीदी आज ना हम खाना निकालने गए, पर हमारे बच्चों ने बताया कि मम्मी आप हाथ धो, पहले हाथ धो के खाना खाना। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार नंगे पाँव हम चले जाते हैं टॉयलेट, नहीं चप्पल पहन के जाना है, मम्मी चप्पल दो, हम चप्पल पहन के जाएंगे। बाहर त्योहार मनाते हैं उसकी जानकारी, या हम जो कलर्स बताते हैं या कोई खेल करवाते हैं, तो बच्चे घर में जाके बताते हैं और उनके माता पिता जब आके हमसे सवाल करते हैं ना, और फिर हम उनको उनके बच्चों के बारे में बताते हैं, तो सबसे ज्यादा वो खुश होते हैं। और हमें भी, उनके साथ साथ हमें भी खुशी होती है और गर्व भी होता है कि हमारा काम मतलब सफल हो रहा है। और मोबाइल क्रेश के प्रति उनके दिल में बहुत सारी दुआएं निकलती है और हमारे प्रति भी। तो कहीं ना कहीं उनके मन जीतने के लिए तो उनके बच्चे हैं। मेरे बात से पहले शुरू में तो हमारी बातें होती ही है, पर उनके बच्चे खुद जाके बताते हैं कि आज दीदी ने ये खेल करवाया, आज दीदी ने ये कलर बताया, आज दीदी ने ये सीट करवाई, आज दीदी ने ये कहानी सुनाई, आज दीदी ने इस पे बातचीत किया। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। धन्यवाद मैमुल जी हमसे बात करने के लिए। एंड छवि मैम, नाउ कमिंग बैक टू यू. For our listeners who want to support and get involved in early childhood development efforts, what are some ways in which they can contribute? You know, the contribution of how traditionally people think is only funds, but I really don't think so. It's also your talent, your knowledge, your skills, and it is, of course, the work at the ground, work in the people who manage those, all that. So office level, and we have across India, there are various organizations, various government running these creches. I think finally is to really make early care and development of a child a movement. Become more conscious of who works for you. At the individual level, spread the word, activate communities to have creches. You have your way, if you're staying in some kind of a society, have you thought of these women who come and work for you, the helpers? Where do they leave the children? They normally come from slums. Do they have a provision? Are the children at the village level? If they're in their slum area where they live,
Are they protected? Are they leaving to their siblings? Or why don't you just start with the whole society to have a creche for them? So I think it's basically becoming more conscious and mindful about people and the needs of people and take the ownership of the children, young citizens of India. So I think that's something very important. So mobilize your neighbors. So if you're a corporation or an institution, volunteer your time, your funds for this early care movement. For policymakers in government and industries, I request you to prioritize early childhood policies. There's a very, very common African saying, and everyone knows about, to raise a child, you need a village. And believe me, it's really true because we really need that. We need the entire country to come together, all the stakeholders to come together. I urge everyone to join Mobile Creches in early care movement and do visit our website. Thank you. You were listening to Chavi Vohra, Pradeep Kumar and Maimul Ansari in the 5th and final episode of our series in association with Mobile Creches. If you want to listen to the first 4 episodes, the links for the same are provided in the description. This episode was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by me, Niharika Nanda. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it. Share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts or write to us at podcasts@indianexpress.com.